Okay. So as per this question, they've already specified Halsey 50% sharing. Anyways, Halsey's formula is with 50% sharing only. Barabar na? Yeah. Last lecture we had done that sum, right? Kavya, yes, you all see. This is Halsey formula. Time taken into NTR plus 50% of time saved into NTR. Okay? Yeah. मतलब they want you to use the single formula of Halsey. Otherwise, Halsey का और एक formula है, right? Halsey weird. Yeah. Right? Okay. So, Rowan and Halsey both they have asked. Worker produced how much? बोला है 200 units in a week's time. Okay, so output is 200 units. And the guaranteed weekly wage payment for 45 hours in a week, he is working for 45 hours is 405. ठीक है? Okay, fine. ठीक है? The expected time to produce one unit is 15 minutes. एक यूनिट बनाने को उसको 15 मिनट लगता है. ये स्टैंडर्ड टाइम है. ठीक है? Which is raised further by 20%. Okay, fine. Under the incentive scheme, उसको incentives भी मिल रहा है कि 15%, I mean 20% increase in time. ठीक है? Fine. What will be the earnings per hour that the worker under Halsey and Rowan scheme? Earnings मतलब total wages. That is what they have asked. ये पूछा. Okay? Right? So, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं सो दैट हमें समझ में आए कि कौन सा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में और कौन सा नहीं है. ठीक है? So always make it a habit of writing the formula first. So write down. What are we doing? Yeah, Halsey plan. Write down. Formula is total earnings is equal to time taken into NTR plus 50% of time saved into NTR. Okay. Okay. Leave 2-3 lines. Obviously, we'll do the working note. 4-5 लाइन छोड़ दो for solving and write the other formula also Rowan. फिर देखते हैं ना what is given, what is not given accordingly. Okay, right. Total earnings is equal to time taken into NTR plus time saved into time taken upon time allowed into NTR. Okay. Again, leave 4-5 lines for the solving part and let us come to the working note. चलो पहले देखते हैं क्या दिया है. टाइम टेकन दिया है सम में 45 आवर्स. ये वाला पार्ट गिवन है. ठीक है. हमें क्या चाहिए? हमें टाइम सेव चाहिए. बट टाइम सेव्ड कैसे मिलता है? हाउ डू यू गेट टाइम सेव? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. ठीक है. आई राइट दिस फॉर्मूला. जस्ट सी व्हाट आई एम राइटिंग. लेटर ऑन यू कैन कॉपी. जस्ट सी. टाइम सेव का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन माइनस time allowed मतलब allotted
टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। टाइम टेकन मेरे पास है, टाइम सेव मेरे पास नहीं है, टाइम अलाउड मुझे नहीं पता, तो मुझे दोनों में से एक भी मिलेगा, आई कैन गेट द अदर इंफॉर्मेशन। ओके फाइन, चलो लेट अस सर्च। टाइम टेकन तो है, इधर लिख दो, दोनों में से एक पहले निकालो, ऑब्वियसली पहले टाइम अलाउड निकालो। ओके सो राइट ऑन, टाइम अलाउड कैसे मिलेगा, लेट्स सी द यूनिट्स and see the conversion in minutes. Okay, now 200 units आपने प्रोड्यूस किया है, करेक्ट, और यू कैन गो लाइक दिस। एक यूनिट बनाने को कितना बोला है वो लोग ने, 15 मिनट्स लगता है, करेक्ट, और इंसेंटिव स्कीम लगाओगे इस पे 20%, इंसेंटिव स्कीम इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स का 20% इंक्रीज कर दो, 18 मिनट्स आ रहा है मेरा आंसर, 18 मिनट्स। तो अगर एक यूनिट बनाने को 18 मिनट लगता है, सो हमने तो 200 यूनिट्स बनाए हैं, सो फॉर 200 यूनिट्स हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके, सो इनटू 200 डिवाइड बाय 1, I have to convert this ना 18 को, बड़ा बच्चा, तो 3600 divide by 60. Okay, anybody understood why I took 60? Why did I divide with 60? हमको मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना रहेगा ना, राइट, तो 18 मिनट, तो या एक यूनिट बनाने को 18 मिनट्स, तो 200 यूनिट्स बनाने को कितना, 3600, बट ये मिनट्स है, तो ये मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दो। ओके, convert this minutes into hours. Okay, I'm writing here, convert into hours, it's simple maths है ये, ठीक है, तो 3600, 1 आवर में कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है, राइट, डिवाइड बाय 60, so कितना, what is the answer that I'll get, 60 hours. Okay, तो ये है मेरा आंसर, this is my time allowed right here, 60. Okay, अब मुझे टाइम सेव मिल जाएगा, यस, टाइम सेव्ड इज 15. I got my time taken, time allowed, and I got my time saved. Is it clear till here? So don't think exam mein everything will be ready made. Yesterday was the first sum, so I took up a easy one where everything was given. Everything is never given. Something or the other information will be missing. Just acknowledge it in the chat box. ठीक है, ये भी हो गया. So working note number 1, calculation of time saved, I mean पहले तो allowed बनेगा, yeah, calculation of time allowed and time saved. Next, what is missing in the question? NTR, NTR नहीं दिया, so working note number 2, calculation of NTR. NTR means rate per hour, एक घंटे में
1 घंटे का कितना वेजेस आप देते हो. ओके. सो 45 आवर्स का यू हैव पेड 405 रुपीज. ठीक है. Let us do that. Hours and rupees. 45 आवर्स का वीकली. हाँ, मैं वीकली की बात कर रही हूँ. हाँ, वीकली. पूरे हफ्ते में आपने 45 घंटे काम किया है और आपको कितना मिला है? 405. 1 घंटे का कितना? NTR मीन्स रेट पर आवर. ओके. NTR इज रेट पर आवर. ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 405 डिवाइड बाय 45. कितना हुआ? 9 रुपीज इज माई आंसर. सो माई आंसर इज 9 रुपीज पर. हो गया सॉल्व. NTR भी मिल गया. अभी जस्ट सब्स्टिट्यूट करो and get the answer. Okay, substitute and get the answer. Time taken कितना? 45 into NTR कितना मिला? 9 rupees plus 50% of time saved कितना? 15 hours into 9 rupees. I hope you all remember. ये basic है, इसको basic wages बोलते हैं. And this element is bonus. Bonus plus basic wages is total earnings. Solve it. Into 45 is 405. मेरा basic wages है. तो जो क्वेश्चन में दिया था 405, that was actually the basic wages. 15 into 9 is 135. इसका 50% निकालो. कितना? 67.5. दोनों को ऐड करो. That is your final answer. 67.5 plus 405 is 472.5. So this is the total wages that you should pay as per the method. Then solve it for the other one. Time taken 45 into NTR 9 rupees plus time saved 15. Time taken 45. Time allowed 60 into 9 rupees. ठीक है. ये तो मुझे पता है 405. ये मुझे पता है. Solve this. 45 divided by 60 into 15 into 9. 101.25. 101.25 plus 405. Okay, so my answer is 506.25. This is my final answer as per the proven plan. Is it clear till here? समझ में आ रहा है? Okay, note it down. Then we'll move on to the next one.
Now moving on to the next one. Go through this question. Okay, then I'll ask you questions on the same. Okay, so just go through करो, समझो. क्वेश्चन समझा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर हेल्सी प्रीमियम एंड रोवन प्रीमियम. ठीक है, फाइन. देन व्हाट? टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब. तो टाइम टेकन इज हाउ मच? 72 आवर्स. टाइम अलाउड टू कंप्लीट अ जॉब 90 आवर्स. तो टाइम अलाउड भी दिया हुआ है. रेट पर आवर ऑफ वेजेस 25 रुपीज. व्हाट इज दिस? रेट पर आवर ऑफ वेजेस 25. ये 25 रुपीज क्या है एज पर द फॉर्मूला? वेरी गुड, एनटीआर. ग्रेट, गुड. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अर्निंग्स पूछा है under the Halsey method and the Rowan method. Okay. Once we are done with few sums now, then we'll go backdated. सारे sums के हम overall formulas करें. ठीक है, जैसे अभी first two sums में we did Rowan and Halsey. Rowan and Halsey. Today also we are doing Rowan and Halsey. Okay, we'll go back to the same sums and we will solve the sums with Halsey also, Redox method also. We have that also in the portion, right? Yeah. So I will not search new sums for Halsey and Redox. Same sum का हम Halsey and Redox method से करेंगे. ठीक है ना? Time? Okay. So time taken दिया है. ये रहा. This is time taken. This is time allowed. तो टाइम सेव्ड मिल जाएगा ना? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. एंड दिस इज एनटीआर. डीए भी दिया है. डीए इज हाउ मच? 10 rupees per day of hours worked. 10 rupees per day of hours work. Okay, so what did I tell you? एक दिन में कितने घंटे वर्कर काम कर रहा है? Anyone? Dearness allowance 10 day rupees 10 per day of hours worked. So in one day, how many hours he is working? My question is that to you all. Yeah, anyone? In one day, how many hours he is working? Because I don't need DA for per day. I need DA to be calculated on per hour basis. Because wages are under time basis. ये टाइम बेसिस वाला फॉर्मूला है. तो टाइम बेसिस में पर डे नहीं चलता है, पर आवर चलता है. So how many hours is working in one day? If you have heard my earlier, what do you call, if you were attentive in last 2-3 lectures, आपको आंसर मालूम पड़ेगा. I always keep saying that lines. How many hours is working in a day?
क्या सिद्धांत? 8 आवर्स कैसे मिला? 8 आवर्स 8 तुमने बोल तो दिया, 8 मिला कैसे तुमको? Okay. By the way, Siddhant, your answer is right, but you don't have reason for it. तुमने आंसर तो बोल दिया 8 आवर्स, but 8 आवर्स क्यों you are not able to justify? Okay. I always kept telling you, as per Factories Act 1948, क्या? What did I tell you? As per Factories Act 1948. कल भी मैंने रिपीट किया था. As per Factories Act 1948, you're not allowed to make a person work for more than 48 hours in a week. 6 हफ्ता, Sunday exclude, 48 hours in a week. तो मतलब 6 दिन बचे, 48 डिवाइड बाय 6 करो, कितना होता है एक दिन का? 8 घंटा. Okay, so 8 hours like this. Understood? So question में नहीं दिया है, but you have to assume Factories Act 8 hours. समझ में आया अभी everyone? Is it clear? Be attentive in lecture, students. Okay? When I'm asking something, answer. ठीक है? कितनी बार रिपीट करती हूँ मैं ये वाला लेबर, आई मीन फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है, चलो स्टार्ट. सबसे पहले फॉर्मूला लिखो. ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. अब इधर एक चीज है, डीए भी है. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सब लिख के रखो. टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 72 आवर्स. टाइम अलाउड 90 आवर्स. दिस इज गिवन. मुझे टाइम सेव मिलेगा? यस मिलेगा. टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, 90 माइनस 72, तो मेरे 18 आवर्स सेव हो गए. दिस इज माय टाइम सेव. ठीक है. NTR is how much? 25. DA is how much? 10 rupees per day. Okay, per day. Okay, and then solve it like this. Assume, yeah. Per day of hours work. So मैंने क्या बोला आप लोग को? Per day of hours work means what you are going to assume? Yeah, your Factories Act 1948, where it says 1 घंटा, I mean 8 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करना. 1 घंटे का डिवाइड करो, तो 10 divided by 8. 1.25 is my answer. 1.25 rupees. ये दिए. ठीक है. अब आप डीए अलग से ऐड करो या आप एनटीआर में ऐड करो, आपके ऊपर. ओके, if you want you can add DA अलग से also and with LTR also.
It's absolutely up to you. Okay. Last lecture also this type of sum we have done. I had added it in NTR. है ना? Yeah. So generally, student, what will the student do? I'm just telling you general tendency of a student. They just write the formula and then they copy paste whatever is given. Okay, yeah. So there is high possibility that he or she may forget to write the DL. ओके, तो अगर आप मतलब एनटीआर में ऐड करने से भूल जाएंगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ. So you can add DA back also after the formula is done, or you can add it in NTR also. Both the ways it is correct, it is not wrong. ठीक है? So I'll show you today the other method. कल हमने दूसरा मेथड किया था, आज मैं आपको दूसरे मेथड से बता रही हूँ, बट बात वही है. ओके, so write down first Halsey plan. Write the formula. Total earnings is equal to, what was it? Yeah. Time taken into NTR plus time saved 50%. Sorry. 50% of the time saved into NTR. Okay. And then DA आप पीछे से भी add कर सकते हैं. ठीक है? Time taken is how much? कितना था? 72. Into हमारा आंसर कितना है? 25 rupees. प्लस या आप इधर सीधा 26.5 भी ले सकते हो डी ऐड करने के बाद. इट्स अप टू यू, एक ही बात है. टाइम सेव कितना था? 18 hours समथिंग आई हैव सेव्ड. 25 rupees. Then DA element. DA is calculated on time taken. चाहिए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ for your reference. DA is what? Time taken into rate per hour. किसका रेट पर आवर? DA रेट पर आवर. हाँ, DA रेट per hour. Time taken is 72 into DA रेट कितना था? 1.2. ओके, सबको अलग अलग सॉल्व करो. This is what basic wages. Do not forget all these things. Okay, this is what bonus. Okay, and this is what DA. Okay, what I was saying is पीछे से DA नहीं ऐड करना है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो. 72 into 26.25 डायरेक्ट. समझ में आया? Is this clear? Acknowledge it in the chat box. Acknowledge it in the chat box. So 75 into 25 कितना है? 1875. 1875 plus 18 into 25 इसका 50% 225 plus DA 72 into 1.25 90 rupees. अब भी तीनों को ऐड करो. पहले तीनों को सेपरेटली सॉल्व करो और फिर ऐड भी करना है. 2190. Okay. Next, Rowan. Rowan plan. Total earnings is equal to, same logic, time taken into NTR plus time saved into time taken upon time into NTR plus DA. So how much? 70, 72 rupees plus 18 into 72 plus
72 into सेपरेटली सॉल्व करो कितना था ये 1875 कितना था this one 72 divided by 90 into 18 into 20 360 answer plus 90 2324. So this is my final as per loan plan and as per IC. Is the question clear to everyone? Okay. Okay, Shivam, और you have written different answer आ रहा है किसका? इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है तुम्हारा